event for you. And we're proud to do it because we have Tiger who can actually do it. I remember I met him in Heropanti. All I wanted to do was make an honest film. Exploring him, I got to know that there are so many skills that only he can do. While making Bagi, of course, apart from it being many things, there is a strong theme in the film of Kalari Payattu. We are very proud to bring this theme into the film because it is the oldest art form of martial arts, of Kung Fu, and it originated in India. It's a very proud feeling to bring that to the film. It's a very proud feeling to have Tiger and Shraddha in this film, and having them do everything on their own. It's really tough. All I can say is that, again, I can say that we're proud to showcase this event to you. Good evening, everyone. It's nice to see all of you here. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक रेगुलर जब हम मिलते हैं हम आपको वीडियोस दिखाते हैं, ट्रेलर्स दिखाते हैं, प्रोमोस दिखाते हैं, पर बहुत एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम we're going to present to you something that you've not seen live happen in front of you. So get ready for some live action from my favorite Bagi, Tiger Shroff. Thank you.
Same move, me. I'll tell you guys something. Wait 1 minute. Uh, uh, Definitely he is my favorite बागी और जो ये करते हैं वो कोई नहीं कर सकता. आप सब कह रहे हो कि श्रद्धा तुम भी वो करो. There's a lot of hard work, training, focus. बहुत सालों से ये कर रहे हैं, इनका passion रहा है. और ये जो ऑफ़र करते हैं I mean कोई भी नहीं कर सकता this kind of talent. पर मैं ये कहूँगी कि हम सब वापस मिलने वाले हैं. And next time, Tiger, खत्म हाँ. श्रद्धा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है. अभी तो हमने स्टार्ट किया एक्चुअली प्रमोशंस. Thank you all for being here and thank you so much for all your love and appreciation for Baghi and we're very happy. बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं और हम सब खासकर क्योंकि हमारी जो ट्रेलर है I think it's doing quite well and so we're very thankful. Thank you so much. Thank you guys very very much. What I meant by saying that is कि हम सब मिलने वाले हैं क्योंकि I will also try to offer something to you guys. आप सबको जो भी मैं कर सकती हूँ वो दिखाने की कोशिश करूँगी. So I hope you guys enjoy that very soon in a few days. आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस बार हीरोपंती के कंपैरिजन में. आई थिंक बिकॉज उस फिल्म को काफ़ी लव और अप्रिसिएशन मिला सब लोग की तरफ से, तो ही इज़ बीन वेरी कॉन्फिडेंट एक्शन में या कोई भी, चाहे परफॉर्मेंस हो या डांस में या म्यूज़िक में. ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू पुश एंड गेट बेटर और आई थिंक दिख रहा है. I'm trying. Thank you. Thank you, Sabir sir. Sure, I think इतनी जल्दी इतना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. I've gotten more than I deserve. I'm very thankful that people are at least noticing me in some way or the other. जहाँ तक मुझे याद है, I knew coming into the industry, बहुत competition है. आजकल के actors इतने तैयार होके आते हैं, तो thinking about that, I used to always think about what makes me different. मुझ में खासियत क्या है, मुझ में खूबियाँ क्या हैं, भीड़ से अलग कैसे लगूँ मैं, अपना खुद का पहचान कैसे बनाऊँ मैं in front of so many talented people. तो उसे लेकर I think I was very thankful with Heropanti and now I'm even more thankful with Baghi. Not only because I'm repeating my director Sabir sir, who's also like a bigger brother and my mentor, but also Sajid sir as well, who's like a father figure. That being said, they both are action-oriented films with a very strong love story. Love is one of the incentives behind the action, and it's what keeps us together as well, and it's why we fight together. So yeah. Sure, why not? Why not? So yeah, definitely you can. You want one right now? Okay. अभी थोड़ा थकेला हूँ मैं सच में. Maybe in the future, I'd love to. Thank you.
फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, खासकर क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कलरी में. बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन दिस ट्रेलर इफ़ यू नोटिस देयर इज़ अ गुरुजी ऑल्सो, जो असल में मेरे मास्टर हैं, और उन्होंने मुझे कलरी पे तो सिखाए. And it took a lot of hard work to just get basic postures of this martial art. लोग कहते हैं कि if you're crossed from 7 years, then you can't learn the martial art. Luckily, I had a great master who taught me in 4 months. Whatever little I know, I think I've done it to my full potential, as honest as I could, and as authentically as my master expresses the art. So yeah, thank you. Are you asking me or all of us? I think there's so much scope for different kinds. That's a different film. We have a different film. However, you know, they've put in hard work. We've put in hard work. I don't want to put down anybody, but it is a very competitive industry, and we worked very hard. So I think we're ready for competition. Yeah. मैं सबको मानता हूँ जी. I'm just so inspired by all of the newcomers and even the veteran actors. हालांकि मेरी जो आइडल है इस इंडस्ट्री में वो है ऋतिक रोशन जी. आई थिंक उम्मीद है और कोशिश ये है कि एक दिन मैं उनका 50% बनूँ, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. I'm very, you know, I'm a very big fan of him, and मैं जो कुछ भी हो आज, you know, I don't try and copy him because I can't copy him, but I try to think about him every time I do a scene, or every time I do an action sequence, or every time I have to perform on stage. So yeah, I think he's the most perfect actor we have. I haven't asked him, but हाँ, I would love to show Hrithik sir that. मुझे याद है पिछले साल हम हीरोपंती की स्क्रीनिंग भी रखे थे उनके लिए. I hope he wants to watch Baghi, and I would love to keep a screening. Sabir sir would love to keep a screening for him as well, and if he's free. So yeah. Let me speak. Let's say no comments to that. क्योंकि वो जो मैटर है अभी कोर्ट में, it will not be right on our part to say anything. I think when you watch the film, you'll realize it's not inspired or copied by anything. कोई टक्कर में है ही नहीं. That's very sweet. But as Tiger said, I agree with him कि competition, I think हर जगह है, but that is something जो आप you know, you can't take that away from the equation. But मैं जो कोशिश कर रही हूँ, and I hope कि मैं वो continue करती रहूँ, कि मैं हमेशा improve करती रहूँ मेरी previous film से, और ज़्यादा हार्ड वर्क करती रहूँ, और ज़्यादा सीखूँ, और चीज़ें अटेम्प्ट करती रहूँ. इस फिल्म में मुझे मौका मिला है पहली बार एक्शन करने का, तो आई थैंक साबिर सर फॉर एक्चुअली हैविंग दैट फेथ इन मी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस रहती थी, और साबिर सर बस यही सेंटेंस कहते थे कि तू कर लेगी, डोंट वरी. तो जब किसी का ये फेथ होता है आप में, तो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. तो आई जस्ट होप कि यू नो आई कीप trying new things. That's all. गुड क्वेश्चन सर. पर हकीकत ये है कि मुझे कुछ नहीं आती है. मैं हर चीज़ में सीखने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा कोशिश करते रहूँगा. थैंक यू सो मच. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. थैंक यू. काश, वो बहुत बहुत खूबसूरत लड़की है. काश, आई मीन शी इज़ टू गुड फॉर मी. आई एम द मोस्ट अनकूल पर्सन. आई विश कोई भी, यू नो, इफ समबडी likes me, I don't really have that many female fans, unfortunately, or that many fans.
पर हाँ कोशिश ये है कि बागी के बाद कुछ एक उस मामले में एक बदलाव if I can bring, you know. But yeah, thank you so much for all the love. Yeah. I'm sorry. Really? You know, nobody knows, but I have a twin brother. Hakikat hai. I'll show you the photo after this. You know, I'm trying to be friendly, but I'm just not that cool. I don't have. कुल मिला के 2-3 दोस्त हैं मेरे. I don't have many friends. जी कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, पर she's too cool for me and she's way out of my league. She's too good. जी हकीकत ये है कि हम खास कुंफू नहीं दिखाने जा रहे. जो थीम है इस मूवी की है वो इट्स द मार्शल आर्ट वे फोकसिंग ऑन इज कलरी पे तो एंड हम ये कहना चाह रहे हैं कि कलरी इज़ द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स और इट हैज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया. आजकल ज़्यादातर मूवीज़ हम देखते हैं जब एक्शन की बात करें तो ज़्यादातर मूवीज़ यू नो व्हेन वी थिंक मार्शल आर्ट वी थिंक अरे चाइनीज़ कंग फू या वी थिंक वेस्टर्न लॉट ऑफ वेपन्स दिस दैट लाइक मिशन इम्पॉसिबल और एक्सपेंडेबल्स और समथिंग. पर it's surprising we don't make any action films on our culture. You know, after all the martial art has been invented here, originated in India. So why can't we change that, and why can't we be proud to be, you know, who we are, Indians, and proud of our culture and our martial art? And I think that's what we're trying to express in Bagi, or partly what we're trying to express in Bagi. Kalari ko lekar. Is it true? Confirmed news? Because I had heard this, so I got very happy because जो पहली आशिकी आई, it connected with the audience in a really big way. मैं बहुत blessed मानती हूँ खुद को कि आशिकी 2 जो है, it had a very strong connection with the audience also. And बहुत ही I think it'll be a historical kind of a thing अगर आशिकी का franchise बनता रहे. And because I think कि हमारी country को intense love stories काफ़ी पसंद है, the way that the movies have been received. So I hope that people like Ashiki 3 also. Last question, guys. आजकल brand endorsement को लेके काफी controversy चल रही है. आप लोग भी brand endorse करते हो. ये कहा जा रहा है कि जो endorse करता है brand को उसे जिम्मेदार responsible होना चाहिए और अगर उसकी कंपनी जिस कंपनी का प्रोडक्ट को वो endorse कर रहा है वो अगर सर्विस नहीं देती है तो brand endorse करने वाली सेलिब्रिटी को भी responsible माना जाना चाहिए. इस पर आप दोनों की राय क्या है, श्रद्धा और टाइगर? आज तो मैं सिर्फ बागी के बारे में सोच के आई हूँ. सही बात है. Do you still answer that question, sir? उसके वो already किया है ना, तो that's why. I don't know, sir. I think to each his own, really. Sorry, सवाल क्या था? I literally lost me. I think depends from if you sign the contract and read the dotted lines. Depends. हर contract के ऊपर शायद every contract is different जी. तो जहाँ तक मुझे याद है, I'm endorsing HRX. Please go buy HRX clothes. And anyways, in my contract, I don't think something like that was expressed. I shouldn't be talking about my contract. हालांकि who am I to talk about this? मैं तो बच्चा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल. पर बहुत ही शुक्र हो कि you know I'm at least getting 1 or 2 brand endorsements इतनी जल्दी मेरे करियर में. But I'll get back to you on that one. Good question. Oh, any day, Bapu.
एनी डे दादा हाँ देखा थैंक यू सो Thank you, मच guys. थैंक यू